ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, एक बहुत ज़रूरी सूचना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो भी आपकी आय है, यदि वो 3 लाख से ऊपर है, उस पर आपका TDS कटा हुआ है, या फिर आपकी आय 50 लाख या उससे ज़्यादा है और आपका कोई ऑडिट नहीं होना, तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखें, 31 जुलाई आपकी आयकर विवरणी भरने यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। और यदि आप 31 तारीख तक नहीं भरते हैं तो 234F के तहत आपको जुर्माना लगने वाला है। तो मैं आपको इस के माध्यम के थ्रू बिल्कुल जागृत करना चाहता हूँ कि आपको रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न भरें, और इसमें कोई आपको हमारी मदद लगती है तो C अमित कुमार गुप्ता के वेबसाइट और C अमित कुमार गुप्ता के फर्म आपको हर तरीके से मदद करने के लिए तत्पर है। आयकर विभाग के अनुसार भी आप हेल्पलाइन पे जा सकते हैं, इनकम टैक्स लॉगिन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का साधारण विवरण है और 5 लाख से कम आए हैं तो उसके लिए ज़रूरत नहीं कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें, वहाँ पर आपको रिबेट है। लेकिन यदि आपका कुछ नियमित है, जैसे आपने कोई पैन कार्ड किया, कोई फॉरेन ट्रैवल किया, तो भी आपको आयकर भरना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा 31 तारीख तक चूके नहीं, जल्दी अपनी बैंक की पासबुक सब अपडेट करा लें और रिटर्न भरें। धन्यवाद। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आज हमारे साथ शंकर गोयंका, वाव फैक्टर कंट्री हेड, आज हमारे साथ हैं। और इतनी खुशी की बात है, देश निर्माण में पिछले 20-25 वर्षों से ये कार्यरत हैं और इन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य बनाया, किस तरह से निस्वार्थ भाव से, मन से लोगों के भविष्य के निर्माण में हमें काम करना है। शंकर सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे साथ हैं। हमें बताएं वाव फैक्टर किस तरह से देश के भविष्य निर्माण में काम कर रहा है। देखिए सर, वाव फैक्ट्री की स्थापना मैंने 10 अक्टूबर 2006 को करी थी और इस उद्देश्य से करी थी कि हम अपने आप को कैसे पहचानें, हम कैसे अपने करियर को संभालें। क्योंकि मुझे लगता है कि 90% लोग इस दुनिया में जो पढ़ते हैं वो करते नहीं, और जो काम हम कर रहे होते हैं उसकी हमने कभी पढ़ाई नहीं करी होती। तो मेन बात है कि हम करें क्या। फिर ना हम करियर में सेटिस्फाइड होते हैं, ना हम सब्जेक्ट में सेटिस्फाइड होते हैं, ना हम जीवन में सेटिस्फाइड है। पढ़ते हम कुछ और हैं, करते हम कुछ और हैं पहले, और सब एक कड़ी बनी हुई है। तो उस उद्देश्य से मैंने इस प्रोग्राम को चालू किया और आज पिछले 13 सालों में करीब 5 लाख बच्चों को पढ़ाया, 40,000 टीचर्स को पढ़ाया, 30,000 PhD के लोगों को पढ़ाया, और उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से, हमारा एक टूल है, ऑनलाइन टेस्ट है, जब आप करते हो तो आपकी पूरी रिपोर्ट आती है और ये बताती है कि आपका लेफ्ट ब्रेन कैसा है, राइट ब्रेन कैसा है, आपका हैंड, फुट, आई, ईयर, कॉन्टैक्ट कैसा है। और हम सब अलग अलग तरह के लोग हैं, पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ, मेरे सुनने का तरीका क्या है, मेरे बात करने का तरीका क्या है। एंड ये काम मैं बड़ी सक्सेसफुली कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और इसके माध्यम से मैंने कई जीवन बचाए, कई लोगों को मार्गदर्शन देने की कोशिश करी, और आज कोई IAS है, कोई IIT कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है। पर मुझे लगता है कि उनके माँ बाप बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि जो आप करना चाहते हो और यदि वही चीज़ भी आपको मिल जाए तो मुझे लगता है इससे बड़ा कनेक्ट हो नहीं सकता। मैं इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मैंने इंडस्ट्री चलाई, बाद में पता लगा इसके लिए मैं बना ही नहीं हूँ, तो मैं किसके लिए बनाऊँ, मैं पढ़ाने के लिए बनाऊँ। एंड दैट इज व्हाट आई एंजॉय एंड लव इन माय लाइफ। सर, देश के तो हर भाग में अपना ट्रेनिंग का सेशन किया ही है, सबको आपका लाभ मिला है, विदेशों में भी आपने किया है। तो अभी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में आपने एक नई प्रथा चालू करी है, ये ब्रेन मैपिंग, ब्रेन प्रोफाइलिंग, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इसमें क्या है कि आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, इसको करने में मात्र 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट के बाद ही मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि आपने का सोचने का तरीका कैसा है, आपके काम करने का तरीका कैसे है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपको क्या चीज़ें नहीं पसंद है। आप देखिए, हम लोग कुछ अखबार पढ़ते हैं, कुछ लोग शुरू से पढ़ते हैं, कोई आखिरी से पढ़ता है। ऐसा क्यों है? हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई कहता है क्या चाहिए, कोई कहता चाय पिला दे, कोई कहता कॉफ़ी पिला दे, कोई कहता कोल्ड ड्रिंक नहीं तो पानी पिला दे, कोई कहता नहीं मुझे खाली कॉफ़ी चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं कि उसको पसंद है, बात यह है कि उसी तरीके से उसे काम करने का तरीका है। तो
तो यदि मुझे ये पता लग जाए सर कि आपको क्या ठीक लगता है, आपके बात करने का तरीका क्या है, तो हम लोग का आपस में संबंध अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, हमारा बिहेवियर अच्छी होगी, हमारी भावना अच्छी होगी और शायद हम बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। आप देखिए ना, हमारे देश का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है 156 देशों में के मुकाबले हम 133rd स्थान पे हैं। इसका मतलब कितने लोग नाखुश हैं। नाखुश इसके लिए क्यों हैं? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज के युग में ये है कि व्हाई शुड आई टॉलरेट यू। हमें पता लगा इस पे आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर्स भी जुड़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कौन कौन से वो ट्रेनर्स हैं और क्या उनका प्रोफाइल है। तो मेरे साथ जो प्रोग्राम में जो सबसे पहले जुड़े हैं वो मिस्टर नाज बोथा, जो कि वर्ल्ड रग्बी लेजेंड है, रग्बी के महान खिलाड़ी है और हम लोग इंडियन रग्बी टीम के ऑफिशियल कोच हैं। और देखिए हमने पिछले 6 महीनों में क्या किया। 6 महीनों में हमने प्लेयर्स की ब्रेन असेसमेंट करी, उनके सीखने का तरीका जाना, उनके खेलने का तरीका जाना और उसका नतीजा क्या निकला। मैन और वुमेन, लड़की का और लड़के का, दोनों की रग्बी टीम अंतर्राष्ट्रीय देशों में खेलने के लिए गई और भारत के इतिहास में पहली बार मैन ने भी और वुमेन रग्बी ने भी इसके ऊपर जीत हासिल की। तो मुझे लगता है कि पूर्ण प्रोग्राम है, ऐसा नहीं कि मैं कोई टेस्ट ड्रिप कर रहा हूँ। हमने काम किया, हमने रिजल्ट दिखाया। बच्चों के साथ यदि हम 3 साल के बच्चे से कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई द हंट, वी कैन आइडेंटिफाई द टैलेंट इन अ चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज 3 year old। अब आप सोचिए 3 year के बच्चे को इफ यू कैन टेल देम कि कल क्या बनेगा, तो माँ बाप का भी फोकस अलग होगा, माँ बाप भी उसको अच्छे से नर्चर कर पाएंगे, उसकी पेरेंटिंग भी अच्छी हो पाएगी एंड ही विल बिकम अ सक्सेसफुल चाइल्ड। और सक्सेस का मेरा ये मानना है कि सक्सेस आपके यहाँ पर यू नीड टू बिलीव, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ में मेरे साथ डॉक्टर एनेट है, जो कि साउथ अफ्रीका की बहुत नोन वर्ल्ड वाइड रिसर्चर है, डॉक्टर है, इस प्रोग्राम के ऊपर कई सालों से काम कर रही हैं। मेरे साथ में मिस्टर जाहिद हैं, वो भी साउथ अफ्रीका से हैं, वो डिजिटल वर्ल्ड के मास्टर हैं। कैसे इस टेक्नोलॉजी को मैं मास तक पहुंचा सकूं। यदि आज मैं काउंसलिंग करता हूं, so I can do counseling for 3 child, 5 child, 10 child a day. I can't do beyond this. But if I do take this program to masses, क्योंकि इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, कैसे हम पहुंचेंगे? तो इसलिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और हम उनको लेके जाएंगे। हमारे साथ में मैडम जैकब भी, डॉक्टर जैकब जो है वो इसके ऊपर काम करे ताकि वो काउंसलिंग कर सके। और इस पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य मेरे परिवार का है, उनका मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ साइकोलॉजिस्ट है। उसने मुझे बताया कि अपने पैशन को ड्राइव करो। जब मैंने पहली बार इस प्रोग्राम में तो मेरी वाइफ ने कहा, सुनो जी, जीवन के 14 साल मैंने आपको सुना, एक तो मेरी बात सुन लो। तो उसने मुझे कपड़े के व्यापारी से एक टीचर और ट्रेनर बनाया। मेरी बेटी राधिका, जो कि दुनिया की यंगेस्ट काउंसलर है, मुझे बड़ा फक्र है कि बच्चों के साथ इतना पेन लेती है। पिछले 3 सालों में मैंने राधिका को काम करते देखा कि एक बच्चा जो कि 40-50% का है, उसको 80 से 90% पे लेगी, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप कराई, उसके माँ बाप से संबंध बेटर कराए, उसके टीचर्स के साथ संबंध कराए। तो हमारा प्रोग्राम पूरे साल भर चलने वाला प्रोग्राम है, ना कि वन टाइम इंटरवेंशन है। फिर मेरा बेटा पार्थ, एक यंग लड़का, कॉलेज पास आउट किया और मेरे साथ लगा और ये कहने लगा, पापा मैं वो करना चाहता हूँ जो आप करें। तो मुझे लगता है कि पिता के लिए इससे बड़ी सुखद स्थिति नहीं हो सकती कि दैट हिज सन वांट टू डू समथिंग व्हाट ही इज परस्यूइंग। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फैमिली, माय टीम, डॉक्टर एनेट, मिस्टर नाज बोथा, जैकब, जाहिद, वी आर ऑल वेरी पैशनेट अबाउट इट। हम लोग सारे पैशन के साथ काम करें। एंड व्हेनेवर यू डू समथिंग विद पैशन, यू डोंट गेट टायर्ड। यू ओनली गेट टायर्ड व्हेन यू आर नॉट पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो फैक्टर के अंदर अगर आप कभी एक्सपीरियंस करेंगे शंकर गोयनका जी को सुनते हुए या फिर उनके किसी भी ट्रेनर को सुनते हुए, तो आपको ये लगेगा नहीं कि आप कोई बनी बनाई बात सुन रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं। आप एक अपना अद्भुत चेंज देखेंगे, अपने जीवन पर उसका असर देखेंगे। जब आप बैठ के सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं, इसको आप ले सकते हैं। और मुझे फ़ख्र है इनको जानते हुए कि मैं 20 साल से इनको जब से फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर, बाकी सभी कंट्रीज़ में जब इनके सेशन होते हैं, आज बहुत ही कम लोग होंगे जो जानते ही ना हो कि शंकर गोयनका किस फील्ड में काम करते हैं। और ये जो अभी अपकमिंग ट्रेनिंग, जो ब्रेन मैपिंग, ब्रेन प्रोफाइलिंग हम चालू कर रहे हैं, शायद ये एक बहुत लंबे समय के लिए, बहुत दूर तक हिंदुस्तान के भविष्य को सुरक्षित रख पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। I am really honored that I am now taking interview of Mr. Dr. Naz Botha from South Africa, who is
world legend in rugby, and he is our Indian coach. He had turned the Indian rugby around. And I'm happy, sir. I welcome you on behalf of India on War Factor. So I just want to know how and what you find in Indian rugby team and how this turnaround had taken place. Firstly, thank you, and secondly, no doctor, so please don't call me a doctor. I got involved with Indian rugby about 3 months ago. I was asked by the Indian Rugby Football Union if I would like to get involved in coaching the men's and the women's team, and then I thought, what a nice experience it can turn out to be, and we started working. We had some training camps in Haryana, and then we felt that there's some fantastic talent in India. People might be surprised, but some great talent with the ladies and with the men. And then we started preparing because they had the two tournaments. The one was in Manila for the ladies, and the other one was in Jakarta for the men. And we started working. I brought some coaches with me from South Africa, Chris Buitendag and Jannie Brooks, that looked after the conditioning. Ludwig van Deventer, he actually assisted a little bit with the ladies, and he's also looking after the Indian 7-a-side, men's and women's teams, that's preparing now for tournaments in Jakarta in August. So we started, a process, and then we started enjoying it. And it looked like they started enjoying it. And at the end, we had 2 games with the girls in Manila. They lost the first one, about 5 points, and then the second one, they won their first ever rugby game in 15, so that was quite an achievement. And I saw the whole of India sort of joined us in our accolades towards the team, so that was fantastic. And then the men, we lost to China, and then we played Indonesia, and we beat Indonesia. And I believe that was the first game they won in like 4 years. So we thought, looking back at it, what did we achieve? Firstly, I think most important is we got a number of girls and men love the game rugby. I would like to see more people in India turning towards rugby, because I think it's a fantastic sport. I was now last weekend in Patna, attending the national 7-a-side tournament. Absolutely fantastic. And the most important thing for me is you could see that the girls and the men that joined us in those 2 tournaments, how they played a fantastic side tournament. So it was just nice, and I think to be just part of it, it's good fun. I'm happy to share that the Indian rugby team is performing really well under his leadership, and almost every record in rugby is attained by Dr. Nas Botha. Mr. Nas Botha, not doctor, I may correct myself. And because he had treated our Indian rugby team so well that if I'll honorably give the title doctor to him, there is nothing wrong in it. So we hope, sir, wish you all the best, and we hope our Indian rugby team will do better. No, thank you, and we're looking forward to this. It's a process. It's a long-term project. But to be honest, and I need to tell the people, there's some fantastic rugby players in India, boys and girls. Thank you very much for being with us. We also have with us Mr. Nuora from South Africa, and on behalf of War Factor, I welcome you, ma'am. Thank you very much. We are very happy and we are privileged to be having with you with us, and I just want you to brief what is this program is all about. This program is huge. I don't know where to start. Your profile will never change from the day of conception. It's been established. It changes never. The other thing that's amazing is advising on sport to determine your dominant eye, hand, ear, feet, and hemisphere will determine your visual field. So your strength, your sensitive ear, people with the right eyes, visual field is left, so we will usually put them on the right side of the field to have more play field. Sport education, teachers, mothers, before people get married, there's not an age to determine exactly when, but it's a huge, make a huge difference in people's lives to understand each other.
Thank you very much for being with us on Wow Factor, on behalf of Wow Factor. I thank you, and we wish that we will have more and more programs in India. Great. Thanks for having us. Thank you. Mr. Zahid from South Africa is with us. He is IT and technocrat, and we are very happy that he is going to deliver some trainings in with Wow Factor in India, and we ask him to elaborate us on this. How, Zahid? What's your assignment in India? Thank you for having me, firstly. My assignment in India is to get wow factors and all our research for the last 30 years to students in a technological way. One of the biggest challenges is to actually change the lives or make a difference in students' lives on a mass scale, and this is true for India. You know, you have a lot of students and you need to get to the masses in a quick and efficient way, and this is my challenge, and this is the solution I was tasked with, and part of my process was to make sure that technology could be used in an efficient way to get to all these students' lives and make a difference. Thank you. And regarding this wow factor, what do you believe that how different wow factor is working in India? What's your views on it? Well, I've got quite a lot of views, but if I can summarize, I think wow factor is actually an identity. We identify exactly who you are from the time you were born, and we use this information to make sure that you are put in the correct environment to properly establish the way you should succeed and the way you should grow as an individual. This information is further used to allow the teacher to handle you in the correct way, to place you correctly in the classroom, and to ensure that you are given your best chance at succeeding. Thank you. Thank you very much for being with us. We wish good luck for you in your future endeavors. Thank you so much for having me. We're excited. Good morning. On behalf of Wow Factors India, we are very honored and privileged that Dr. Annette from South Africa is here with us. Welcome, ma'am. Thank you, sir. It's my And privilege. it's wonderful that we had been working since last week on a very different aspect of brain profile. And I now want to open the session with Dr. Annette to brief what is this all about. It's our privilege to be in your country, and thank you for your hospitality. We are here to share some information about profiling people genetically. So it doesn't matter what age, we can start from age 3 already determining a person's unconscious genetic dominance. So whether it's a child, whether it's a teenager, assisting in career advice, whether it's a corporation that want to understand their team better, we would actually establish the dominance of the hemisphere, the eye, the ear, the hand, and the foot. And once we know the profile of a person, it will tell us how they would unconsciously interpret information, see, hear. Possibly if a person is a right ear dominant, they might be impatient with other people, while a left ear person would be very patient with people. So imagine those two people together in one meeting, and the possible misunderstanding that can happen. Also, if it's a person needing career advice, an impatient ear person will put in a career where they get paid to interrupt people, where a sensitive gentleman ear person, we would put in an advisory capacity. So it's simple little things like that that help people to understand each other better and not actually misinterpret and make assumptions, and misunderstanding can be prevented about people understanding each other much better. Other than South Africa, on how many countries around the globe we are having this concept? We know actually that the Russians actually would assess a person's profile at age 4 to determine what sport they will excel in. Sadly, the feedback is never given to the school or the parents, so that person will be active in a sport, but not know information about their profile. So where we interact with people, we've done work in the UK, I'm busy in the USA at the moment with businesses. We've been doing work all over Africa. So the intention is that when we do a profile, if it's a child, the parents should have the information about their child, how to discipline them, how they should study differently, how they should interact in school differently. If it's an adult person, they need this information for relationships, in the career advice. So it doesn't matter where and why, the information is always relevant for that person. So what is the right age for a kid, either in infancy or adolescence? What is the right stage and when we should start this, and up to what age level?
Ideally, we should assess a person the first time at age 3, but doesn't matter. Even if we see a child the first time at age 4, at age 6, the ideal would be that even if we see a child at age 3, that we would have that influence eventually in grade 11, 12 in the careers that they might choose. So as long as we see the child hopefully before grade 10, that we can have influence in that career that they might choose, or else they might end up in the wrong career or in the wrong studies. Is it also having some significance or vital impact on a person with differently able? So even a disabled person still have a profile and possibly a left ear, meaning they've got musical intelligence, that's something they can pursue. Or maybe that person has got a left eye dominance, meaning they've got ability to design or be a graphic designer or creative. So all people are born with an unconscious dominance that is established already at conception. Why don't we know this information? So, on behalf of Wow Factor, I just want to inform to this country that it is going to be another blowstorm in the history of mind and brain mapping and brain profiling. We thank Dr. Annette for being with us. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you so much. Thank you. इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एवन न्यूज़ टीवी। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।